हमेशा लेट रहते हैं तो सामने इज वन send the answers when you're done, okay? 4 questions only. Don't take too much time. And also, I don't just need the answers, okay? You have to show me what you have done. Functional group unsaturation, and then the parent, and then the substitute. I hope you guys remember this.
एक ही किया है फातिमा आपने? नहीं नहीं, सही नहीं है. Some mistakes are there. Please follow the tips, okay, that I have given, the 3 tips. That will help you make lesser mistakes, okay? Still waiting for others. You देखिए फातिमा, आप ना प्रोसीजर से जाइए ऐसे. You first of all circle what there is no functional group, okay? Then you have to look at the parent. Then you highlight the parent, make a highlighter or something, or just make a box around the parent. Okay. Once you have identified the parent, then you start the numbering. Where will you start the numbering from? Okay. So think about that. For that, you have to look at the numbering tip. And after that, you have to see what are the subsequent. Then whatever is left after the identification of puff is the subsequent. Then you circle out the subsequent. If you do it like that, you will understand it. Still waiting for others? Yeah, this is correct, Sarah. And yeah, second one is also right. So seeing yours, Wafia, no? Okay, for the first one, again, Wafia, same mistake. You have not identified all the subsequent. Okay, and then again, you are missing the subsequent. See, subsequents you are missing, no? You are not writing all the subsequents. Okay. Ahmed, did you watch the lecture? Yes, sir. Okay, let us look at the first one. Okay, Razan, Fatima, Wafia, all of you will tell me what is the functional group here? In the No first case, what is the functional functional group? Loudly. There is no functional group. None. Functional group is Sir, I none. had sent the answer. If it be, I'm not satisfied with how you have got the answer. Okay. Let us see. Functional group is none, so it will be E. Unsaturation is none, so it will be AN. Now we have to look at the parent. So for parent, we can start from this carbon atom also, this carbon atom also, this carbon atom also, and this carbon atom also, right? One, you can write A, B, C, and D. These are the 4 terminal carbon atoms, right? Where should I start from? देखिए यही सब चीजें से आप लोगों को जल्दी बताइए कहाँ से स्टार्ट करें? A, B, C और D. Fatima is saying D. Okay, let us start from D. So we'll have 1, 2, 3, and 4. Okay, 1, 2, 3, and 4. But if you see this numbering, I can
this chain is correct. Okay, the chain is correct, but I can number this like this, right? 1, 2, 3, and 4. So if you look at these two numberings, then what do you see? You see that tell me for the blue numbering, where are the substituent? Fatima, for the blue numbering, where are the substituent? We have a substituent in the second carbon atom, correct? Yes, sir. Then we have a substituent where? Third carbon atom. This is my parent atom. Then we have a substituent in the third carbon atom, right? How many substituents are there in the third carbon atom? 1 or 2? 2. 2, right? And add this 3 plus 3 plus 6, that will be giving you 8. But if I use the green one, then we will have 2 plus 2 plus 3, if you can see. We have a CH3 in the second carbon, CH3 in the second carbon, and in the third carbon we'll have Cl. That is going to give me 7. And this is lesser than 8. That is why we are going to use the green one and not the blue one. Okay, that is the lowest locant rule. Fine. Now what we have parent as bu, and then let us look at the substituent. So we have a substituent, that is this substituent here, chloro. Then we have one CH3 and then again CH3. So right, we have chloro in the second carbon atom. So write 2 chloro. And then we have 2 CH3. So what is the word for 2 in chemistry? What is the word for 2? कैसे लिखेंगे? We have 2 methyl group. We have 2. Fatima, loudly. What is the word for 2? In chemistry, what is the word for 2? Guys, please write in chat ना, जो लोग नहीं बता रहे हैं, रजान, वाफिया, फातिमा, please answer in chat अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं बिल्कुल? Not 2 carbon atoms. देखिए, दो अलग चीजें. If I ask what is the word for 2 carbon atom, then you will say F. But if I will ask what is the word for 2, then this number 2 is represented by di. Yes or no, please tell me. Yes, I hope sir. you got the difference. Yes. Razan, Wafia got the difference, Yes, sir. right? Okay, now what do we have? We have 2 methyl groups. Now that means this 2 will be represented by di, and then we'll have methyl. Okay, then we'll have methyl. So we have 2 chloro and we have dimethyl. Now, where are the methyls? It is in the third position. And where is the other methyl? It is also in the third position. So this will be 3, 3 dimethyl. Now you can just write from substituent to parent to unsaturation functional group. You will get the name 3, 3. Okay, I will start with chloro because C comes before M. Whenever you are looking for the alphabet, you are going to look at the name that is starting from C and the name methyl that is starting from M. This di is not a name, it just represents that there are 2 methyl groups. So you have to look at the name and not at the number. Di is not a name, it is a number. Okay. So you can write the name 2 chloro 3, 3 dimethyl. Butane. Clear? Ahmed got it now? Yes, Ahmed? sir. Okay. Fatima, Razan, and Wafia got it now? Yes, sir. Okay, let us look at the next one. Please don't write now. Please don't write. ठीक है, ये सब आप लोगों को करना है खुद से ही. Tell me for the next one. Functional group. वाफिया और रजान आप लोग प्लीज आंसर कीजिए ना, चुपचाप क्यों बैठे हैं बिल्कुल आप लोग. वाफिया, रजान और अहमद. सारा का ठीक रहा है सब. फातिमा तो आंसर कर रही है, आप लोग भी आंसर कीजिए. फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? वाफिया प्लीज आंसर. हाँ, नन. वेरी गुड. We represent none by E. ऐसे बोल बोल के कीजिएगा तभी आएगा. Then we have unsaturation. What is the unsaturation? AN. AN. Unsaturation is none. And we represent no unsaturation by AN. Now we have the parent.
Now here we have A, B, C, and D. Where should I start numbering from? A, B, C, or D? Where should I start the numbering from? A, B, C, or D? See, when you don't have functional group or unsaturation, you start from where the nearest substituent is. When you don't have any functional group or unsaturation, start from where the nearest substituent is. Where is the nearest substituent? Which carbon atom? A, B, C, D. or D? D carbon atom, right? So start from D, 1. Then I will go to the next carbon atom, 2. And as you can see, if I go either above or below or towards the left, I'm going to get only 1 carbon atom. So I can just follow the linear structure like this, 3. Okay. Now we are going to just remove these, highlight the parent carbon chain, and we have identified till here 3 carbons now, 1, 2, 3. So this will be what? 3 carbon. It will be represented by what? Tell me, guys. Prop, na? Yes, sir. Yes. जल्दी आंसर किया कीजिए आप लोग, टाइम लगा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम. लिखना नहीं है, प्लीज लिसन एंड आंसर, डोंट राइट एनीथिंग नाउ. लिखा तो लास्ट क्लास में भी था आप लोगों ने, है ना? आंसर कीजिए यहाँ पे सर. पेरेंट इज prop, then the substituent. So what do we have a substituent? Please tell me. What do we have? What do we have as substituents? Please tell me. नहीं आ रहा किसी को क्या? वाफिया, रजान, फातिमा, अहमद, बताएं. हाँ बोलिए. 2,2 dimethyl. हाँ करेक्ट. When we and I ask ना, तो आप ना पहले इसको सिंपल रखिए, ठीक है? सीधा आंसर की तरफ जाइएगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है. ओके. So when I ask what is the substituent, you will see that whatever is remaining after the identification of puff, we have CH3, another CH3. So you have 2 methyl groups. Now 2 methyl groups will be represented by dimethyl. And where are these 2 methyl groups? So one of the methyl group is in the second carbon, the other methyl is also in the second carbon. So you have to tell the location of both the methyl groups. And if you start writing it like this, you will get 2,2. Name आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, okay. Now what we have one more substituent ना, यहाँ पे देखिए मिस हो गया. इसको हमने यहाँ तक बना दिया, इसलिए मिस हो गया. Only here it will be. We have another substituent that is chloro. So this is 1 chloro. Now again we will be writing the name starting from chloro. So it will be 1 chloro, 2,2 dimethyl propane. Dimethyl propane. ठीक है? चलिए, moving to the next one. I will not write anything. Tell me everyone, functional group. Ahmed, Fatima, Razan, please keep your mic on. Functional BR. group बताइए. हाँ Fatima, tell me once again. BR. नहीं. BR list of functional group में है. Is BR there in the list of functional group that we have written? Yes or no? Tell me. Sir, it's No, none, sir. sir. No, sir. No, no. So what is the functional group? None. 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 Very good. Non-functional group. Then how do we denote the function? How do we denote the non-functional group? Tell me. How do we denote E. none? By writing E. Very good. Okay, remember that. Then what is the unsaturation? Do we have any double bond, triple bond, or there is no double bond or triple bond? Double Sir, we have bond. double bond. Double bond. Double bond. How do we represent the double bond? EN. How do we represent the double bond? Once again, please. EN. En. Very good. What about others? Razan, Wafia, I did not hear you guys. How do we represent the double bond? EN. Very good. Please answer. Please keep answering. Now, how many terminal carbons can you see? We have identified the functional group and we have identified the unsaturation. Now we are going to for the parent carbon. So for parent carbon, we will start with the terminal carbon. How many carbons can you see which are terminal? How many terminal carbons can you see?
बताइए। B. कीप योर माइक ऑन, अच्छे से बात The कीजिए, three. ठीक है। 2. हाँ 2, फातिमा फिर से देखिए, फातिमा फिर से देखिए। Sir, 3. 3 है, एक है आपका Yes. CH2 डबल बॉन्ड वाला, एक है आपका CH3 दैट इज सिंगल बॉन्ड, एक है CH2 दैट इज हैविंग a single bond. Okay, so we have 3 carbon atoms which are terminal. So where should I start from? CH2 double bond, CH3 single bond, or CH2 Br? Which CH2? CH2 double bond. CH2 double bond. Very good, CH2 double bond. Why? Because we start from that carbon atom that is nearest to the functional group. If not, then we go for unsaturation, and in unsaturation we first of all go for the double bond. Very good. So start, and you will number it. Okay, so we'll go from CH2 double bond C and then CH2 Br or CH3. Which side? Which side? CH2 Br or CH3? From the second Anywhere. carbon atom. Yes, Fatima. Anywhere. Anywhere? No. Because If there is, because both of the places will get only 3 carbons, right? okay, fine. Now, can you please read the tip number 2? Read it out loud, now, Fatima. The second tip. Start numbering from that terminal carbon Zor se. which is nearest to functional group. If there is no functional group, then the terminal carbon that is nearest to double bond. If there is no double bond present, then carbon nearest to triple bond. If there's no triple bond, then longest chain. If tie between the longest chain, then the one with more substituent. ठीक है, तो longest chain में tie हुआ है ना, right? Yeah. Which will give you more number of substituents? Tell me. See, if I go like this, that is why highlighters are very useful. If I go like this, then I am getting one substituent, right? Yes, sir. So, and if I go like this, starting from this, these carbon atoms, then I am getting what? 2 substituents. This is Br substituent and then CH3 substituent, right? Tell me. Yes, sir. Yeah. I have to take the CH2 Br1, okay? Now, what are the 2 substituents? We have got the parent like this, 1, 2, 3. Anna? So this will be what? The substituent is 2-methyl. Okay, and this Br is what? 3-bromo. Okay, so we'll start with 3-bromo or 2-methyl. Tell me, guys. How should we start? How should we start naming? 3-bromo or 2-methyl? 3 bromo. 3 bromo. 3-bromo. 3 bromo. Very good. 3-bromo, 2-methyl, and after that, the parent chain. What is the parent chain? What is it? जोर से रोजान, आप तो माइक ऑन करती हैं और ऑफ करने में ही लगा रहता है बस आपका दिमाग। ऑन कीजिए। नहीं, आवाज ही नहीं आई, फिर से बोलिए। 3 कार्बन्स है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेम। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ रजान, टेल मी। पेरेंट क्या होगा? क्रॉप। आफ्टर दैट very good. 1e. So see, double bond is in the first carbon, second carbon both. So we'll take that carbon which is having lesser number. So it will be 1e. Okay. Sir, why 1 in? आपको क्या करना? 2e? Only propene. नहीं, वो भी कर सकते हैं आप, बट 1e में कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, जस्ट टू हैव अ कंसिस्टेंसी ना, दैट यू आर नंबरिंग एवरीथिंग, ठीक है, तो कभी मिस नहीं होगा। नो बट 1 कहाँ से आया? अरे ये है ना, फर्स्ट कार्बन में है ना आपके पास, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में है, फर्स्ट कार्बन में है ना। ओके ओके सर। 1 कहाँ से आया, वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि लाइक वेयर इज द अनसैचुरेशन। चलिए इसका आंसर प्लीज भेजिए आप लोग, हम और 5 मिनट दे रहे हैं आप लोग को, ये इसके बाद तो सिर्फ हम अब तो असाइनमेंट आप लोग को हमने नहीं दिया क्योंकि हमको लग रहा था कि आप लोग के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ होगा, आईपैक नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाइएगा। आज हम देंगे आप लोग को असाइनमेंट। ओके, वी विल सी द लास्ट वन सारा, हम अभी आपका देख रहे हैं, एक सेकंड। ठीक लग रहा है हमें तो।
What chat do we have? Okay, Razan. I think that is fine. Waiting for others. Fatima, Sara, Wafia, and Ahmed also. नंबरिंग में गलती कर रहे हैं आप. नंबर कहाँ किया आपने? I want to see 1, 2, 3, 4 in the carbon chain, Ahmed. And you also have to show where is the double bond. एक सेकेंड. फर्स्ट कार्बन में क्यों होगा वो पूरा? अहमद, बीच में आपने चेन को क्यों छोड़ दिया है? बीच में जितने कार्बन एटम्स आ सकते हैं चेन में सारे कार्बन एटम्स आएंगे ना अहमद. Sir, could you repeat, sir? Why have you broken the chain? You have to complete the chain, right? From one terminal to next terminal. All the carbon atoms you have to take. आप Oh, देख रहे हैं okay, आपने sir. क्या किया? Got it? Yeah, okay, sir. इसको ठीक कीजिए. Waiting for Fatima and Wafia. Numbering is wrong. Wafia, see, you have not numbered one of the carbon atoms. Please see that. Wafia, did you see your mistake? Look at the carbon atoms, count it with your fingers, 1, 2, 3, like this, and tell me. Sir, what did you ask? I actually went because like someone came on the door. हमने पूछा इसका नॉमेनक्लेचर चाहिए भाई. आप अभी आ रही हैं, आप अभी बात नहीं. प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स ना. अभी आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक क्लास यहीं पे रुका रहेगा. वाफिया, बाय द वे, डिड यू गेट द मिस्टेक? So is it 5? हाँ, करेक्ट. नाउ नंबर इट वंस अगेन. You understood it ना? Yes or no, Wafia? या फिर you have just guessed it? Yes, No, Wafia? sir. Understood ना? Yeah. Okay. Okay. Send your answers in chat now, or you can send the photo also. Ahmed, you have to change the answer and send me. Wafia, you have to change the answer and send me. Fatima, Yes, I'm sir. still waiting for your answer. अब इसके बाद हम आपको 11th क्लास के लेक्चर्स दे देंगे. वहां से आप लोग पढ़िए, वहां से आप लोग सीखिए नॉमेनक्लेचर को, अगर आप लोग को और एक्सटेंसिवली जाना है तो. फिर डाउट अगर कुछ हो रहा है तो फिर हमें बताइए, क्योंकि आई डोंट थिंक यू हैव प्रैक्टिस द प्रीवियस चैप्टर. आई मीन प्रीवियस लेसन में भी जो हमने कराया उसको आपने फिर से नहीं करके देखा है. I also told you to do the NCERT exercises actually. लेकिन वही आप लोग असाइनमेंट के इंतजार में रहते हैं. सर जब तक देंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं.
Fatima, if we will have two methyls, है ना? If we have two methyls, then what do we use? Fatima, if we have two methyl, then what do we use? Fatima, can you please turn the mic on at least? Yes, sir. If we have two methyl groups, है ना? तो फिर क्या use करते हैं हम? What is the word we use for two? Di. डाइमिथाइल यूज करेंगे और उससे पहले कॉमा से हम लोग बता देंगे कि पहला मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, है ना? Yeah. राइट और नॉट फातिमा? Yes, sir. ओके, करेक्ट हुआ क्या? चलिए, अब इतना ही। अब हम आप लोग को जो होमवर्क देंगे उसमें आप लोग इंडिविजुअली हमसे पूछ लिया कीजिएगा। आई थिंक वी कैन मूव ऑन नाउ। ओके, अहमद, व्हाट यू वर आस्किंग ना, आप बताइए जरा, क्या आप पूछ रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में? आज तो कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे लगता है हम। यस अहमद, Sir, what, sir? यू वर आस्किंग समथिंग ना, एरोमेटिक का कुछ तो स्टार्टिंग में क्लास के। Sir, no, it was related to this only. I got an idea. You got? Okay. Fine. Right, next. Okay. Also write some points to remember. This is from 11th standard once again. Carbocation. Okay, so carbocation has three groups. It will be attached, it will be having three bonds, and there will be a positive charge because the octet is not complete. Okay, it only has 6 electrons here. Carbocation. It is electron poor. Okay, it is what? It is electron poor. Fine. And there are some electron donating group that will stabilize the carbocation. So if you have carbocation such as, यहाँ पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा इसको please. CH3, when I am writing, then it is going to have 3 bonds with hydrogen and positive charge, right? Then I can have CH3, which is bonded to a carbon atom having 2 hydrogen groups. Now this carbon atom has 3 bonds, positive charge. So this is also carbocation. You can also have a carbocation like this: CH3, C, one more CH3, and then one hydrogen. So it has 3 bonds once again and a positive charge. Then you can have a carbocation like this, which will have all of the bonds with CH3. Now this carbocation is not attached with any other group, so this is not said as 0 degree, but it is, you can assume it in your head. Don't write 0 degree anywhere. But this is going to be 1 degree because this carbocation is attached to one CH3 group. This is going to be 2 degree. This is going to be 3 degree. 3 degree is most stable. After that, we have 2 degree, and then we have 1 degree. Okay. So this is the stability of carbocation. Stability लिख लीजिए बस. CH3s are electron donating group, so they will donate electron towards the carbon atom, and it will decrease the charge density of positive charge. Okay, it will neutralize the positive charge, and when the charge decreases, the stability increases. When the charge decreases, stability increases. Okay, this is the one more point about carbocation. ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ जो आते रहेगा 11th क्लास का, हम उसको बताते रहेंगे. That is why this chapter is going to take a long time, even if this is a small chapter. Okay, done everyone? All of you wrote this? Yes or no? Please tell me. Sir, 1 second. Okay, okay. Done, sir.
Right, next. Method of preparation of haloalkanes. Method of preparation of haloalkanes. Right, number 1. In this, we'll start with alcohols. Okay, in alcohols, the first one we will do is using phosphorus-based reagent. Using phosphorus-based reagent. We are learning the method of preparation of haloalkanes, but we are also learning the chemical properties of alcohol, right? Because all of these reactions are given by alcohols. So ये सारे reactions ना alcohol वाले chapter में फिर से आएंगे. So in general, if you have ROH, alcohols will have ROH, okay, OH hydroxy group, and if you react this with PCl3, we are going to get RCl plus H3 PO3 ना, H3PO3. This is not important. आप इसको भी तो याद ही मत कीजिए initially. अल्कोहल वाले चैप्टर में सारी चीजें लिखाएंगे. अभी आप देखिए कि you have to remember what haloalkane is made by this reagent and this particular reactant substrate PBr3. It is going to make what? Tell me, any guess? PBr3 से क्या बनेगा? What will be formed if we have PBr3? R will be attached with which halogen? Br. ये भी गेस करने में आप लोग इतनी दिक्कत हो रही है, प्लीज गेस कीजिए आप लोगों के. Even if you have not done the reactions, guess it. Red phosphorus plus X2, and this X can be, arrows should be always larger than the content. So I will write the content first. Red phosphorus plus X2, and this X2 can be I2 or Br2. Okay. It is going to give you Rx, where X will be either whatever halogen you are using, I2 or Br2. Right, next one, PCl5. क्या मिलेगा यहाँ पे? R will be bonded to which halogen? Tell me. R will be bonded to which halogen? Cl. Very good. After this, you will write the B part. Using thionyl chloride. Done with phosphorus paste? Yes or no? Please tell me. Done? Yes, sir. So could you scroll up one second? So 1 second. हाँ, ये नो वाले आप लोग थोड़ा जल्दी बोला कीजिए, ठीक है? लिखने से पहले ना आप बोल दिया कि नो सर. जिन लोगों ने लिख लिया उनका हाथ तो खाली रहता है, वो तुरंत माइक ऑन करते बोलते थे यस सर लिख लिया. And this thionyl chloride one is important, okay? Questions, they come from this part. Done? Ahmed, Sarah? Yes, sir. Okay, right here. When alcohols are treated with thionyl chloride, they form chloroalkanes. With SO2 and HCl gas. You will remember everything here, okay? And here the byproducts are also very important. Here we have the byproducts which are also very important. So when we have ROH, any alcohol, we react this with SOCl2, thionyl chloride. It is going to give me, बताइए क्या देगा R? It will be bonded to what? Which halogen? R
Cl. Very good. Cl plus SO2, which is a gas, and HCl, which is a gas. Why are these two very important? Why is the gas very important here? Because SO2 and HCl, if they are gas, they will evaporate, right? They will go away, and in the beaker, you will be left with pure chloroalkane. That is why no separation is required. Okay. So here you will get a question like this: why treatment of alcohol with thionyl chloride is preferred for preparation of alkyl halides? So for this, you will write answer, and that I'm writing here as a star mark is right. This method is a preferred way. Is a preferred way of preparing haloalkanes as the byproduct SO2 and HCl are gas and they escape easily. Hence, no separation is needed. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. इसको तो बिल्कुल नोट वोट लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Multiple times CBSE has asked this question. Done, guys? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Yes, sir. Anyone not? Yes or no? Right, next. Third, right? Using halo acids. What halo acids? HCl, HBr, and HI. Okay, so right. Now in your NCERT, HCl is given more prominently. So I will write the statement according to HCl. Treatment of HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 gives alkyl chlorides. Okay, so you have a reaction like this: ROH plus HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. It is going to give me react. आप लोग लिख लीजिएगा product खुद से. Tell me, guys, can you write the product on your own? क्या बनेगा? Okay, see this. And this RCl. RCl plus water. I hope you can see. Okay. Right, rate of reaction for HX. So if I use HI, it is going to be fastest because hydrogen iodide bond is very weak. They can easily break. Then we have HBr, and then the slowest is HCl. Similarly, rate of reaction for ROH. Now here the 3-degree alcohol will be fastest, followed by 2-degree alcohol, and then followed by 1-degree alcohol, followed by CH3OH, which is 0 degree, you can say. Okay.
Why is that? Because it is followed by a formation of carbocation. We are not very much interested here right now in the mechanism. We will look at this reaction once again. It is in detail when you are going to learn about the chemical properties of alcohol. Then we are going to see this reaction once again. And then also you will understand at one more point that HCl and ZnCl2, both of these combined, they are known as Lucas reagent, and it is used for the identification of primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. We distinguish them by this reagent, Lucas reagent. Okay, so what are those things? Everything that will be in your next chapter, alcohols. For right now, what you have to remember, you have to remember that when you need to prepare haloalkane, उस पे आपका focus होना चाहिए. Okay, so for that, what do you need? We need alcohol and HCl. Okay, that's it. अब उसके बाद अल्कोहल के साथ ये क्या क्या करता है, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करता है, वो अल्कोहल वाले चैप्टर. Right now we are more focused on the preparation of haloalkane. So right now we have alcohol plus HCl. It is going to give me RCl. So you can make it like this, ROH plus HCl like this. Done everyone in Sonobri Salmi? Yes, sir. Okay, subne? Okay. Two things are done. Thionyl fluoride is also done. Right, next. Using NaBr in the presence of H2SO4. Fourth reaction. All of these are from alcohol, okay? Using NaBr in presence of H2SO4. Is right. When alcohols are treated with NaBr in the presence of H2SO4, then HBr is formed. HBr is formed in C2, which reacts with alcohol. Sir, after formed in, what did you write? In SITU, मतलब समझाएंगे, in C2, Okay. which reacts with alcohol to form alkyl halide. देखिए HBr हम लोगों ने नहीं लिया है, हम लोगों ने क्या लिया है? We did not take HBr, but HBr is reacting with alcohol. What did we take? We took NaBr and H2SO4, and from that what we are getting? From that we are getting the HBr. So HBr is formed in the reaction, and then it is also reacting in the reaction. It is a product which is acting as a reactant. So a product which is acting as a reactant, it is formed in C2. That means reaction के अंदर जो form होता है उसको क्या बोलते हैं? In C2. फिर reaction में consume भी हो जाता है. Okay. Write this down. Let me know when you're done. अब इस reaction में क्या लिखिएगा? You'll write this for this reaction. You will write ROH plus NaBr plus H2SO4. It is going to give you RBr, right? Plus NaHSO4 and H2. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
Right, next. A remark. Okay, in this remarks you'll write the above reaction or the above method. The above methods cannot be used for preparation of haloarenes from phenol. देखिए, what we have done ROH, we are breaking this bond and we are forming RX, right? So उसमें बहुत सारे लोगों को क्या लगा that what we can do, we can also do the same reaction with benzene ring with a OH here, and then we will do some reaction. This bond will be broken and we will be forming. काफी similar लग रहा है, but it is not that similar. Why? Because we have OH here. And what is this OH? This OH has lone pair electrons which will take part in resonance. So this double bond, this bond here, that is CO bond of phenol, it will become partial double bond. And breaking partial double bond is difficult. That is why we cannot make haloarenes from phenol via above methods. Okay, via above methods, because please write. The above methods cannot be used for preparation of haloarenes from phenol. Haloarenes from phenol because all the methods require cleavage of CO bond, COH bond. But the COH bond in phenol is partially double bond. Due to resonance and difficult to break. Done, guys? Yes, no, please tell me. Done, everyone? Yes, sir. Okay. Achha, one thing you should remember. Okay. This is haloalkane or haloarene. Please write in chat A or B. Is haloalkane or haloarene? Write in chat.
किसी को नहीं पता क्या? Sir, हाँ आंसर चैट में, चैट में, चैट में। आपका Sir, टाइम हो गया क्या? I have to leave, sir. Sir, today I हाँ। stayed extra time because he was starting at 7:15. ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, आप जाइए। ओके नो प्रॉब्लम, Thank you, sir. थैंक यू। Okay, I've got two answers, Fatima and Sarah. वाफिया एंड रजान, प्लीज आंसर ना ए और बी। आपको इसमें इतना टाइम मत लगाइए। देन आई विल टीच यू अ मेथड हाउ टू आइडेंटिफाई। ये चीज हमने कराया हुआ भी है। ओके वाफिया। ओके रजान, रजान वाई ए। यस रजान, वाई ए। You can now speak, Razan. किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया रजान, ठीक से बात कीजिए आप। Keep your mic on for a while, then start speaking. I just guessed it. You just guessed it. Okay, fine. It's ठीक है। not my- Okay, fine. So I'm right now what I'm doing, I'm numbering all of the carbon atoms. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I hope all of you saw that there are 7 carbons in this. Fatima, Razan, Sarah, and Wafia. Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes. Okay. Now you tell me. आप लोग आप ये बताइए, the halogen atom is attached to which carbon atom? 1 से लेके 7 में, from 1 to 7, the halogen atom, that is chlorine here, it is attached to which carbon atom? One. 1. 1. All of you can see that, right? All of you can see that. Okay, fine. So we'll focus on this one first carbon atom. Do you know about hybridization? Yes or no? Tell me. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को नहीं पता, ठीक है छोड़िए, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर भी चलिए, मान लिया आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है। Is this carbon a benzene ring? Yes. This carbon is a benzene ring. No. Huh? Do you see the difference? Sarah, Wafia, Razan and Fatima. Yes, sir. ठीक है, अब यही चीज देखिए, हमने पहली क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था, जहां तक हमें याद है हमने पढ़ाया था। देखिए अराइल हैलाइड जो हैलोअल्कीन होता है डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ओके, एंड देन वी आर लर्निंग अबाउट द, क्या था ये सारा का सारा क्या है, एल्काइल हैलाइड, यानी कि हैलोअल्कीन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें वी सॉ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड देन allylic and then benzylic. Okay, so this was what halogen atom connected to sp3 carbon which is further connected to benzene ring. तो ये जो होता है आपके पास, this is not haloarene, this is haloalkane, because this carbon atom is what it is, sp3 hybridized. Okay, so similarly when I will ask this now, what is this? Is this alcohol or phenol? Is this alcohol or phenol? Tell me. What do you guys think? देखिए अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच OH है तो इट विल बी, अरे फिर फातिमा आप वही बात कर रही हैं, अल्कोहल और फिनॉल में फर्क। आपको पता है अल्कोहल और फिनॉल क्या क्या होता है? फिनॉल पता है क्या होता है? फातिमा, डू यू नो व्हाट इज फिनॉल? No, sir. हाँ तो फिर क्यों बोल रही हैं आप बोलिए सर फिनॉल ही नहीं पता हमें। देखिए दिस इज फिनॉल, ठीक है। ये बेंजीन रिंग को आप मत देखिए, प्लीज सी दिस हाइड्रोक्सी, दिस इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन एटम? इफ दिस इज sp3 ना, इफ इट इज नॉट बेंजीन देन इट इज गोइंग टू बी अल्कोहल। फातिमा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कंफ्यूज लग रही हैं। Yes, sir. ठीक है, कहाँ देखना आपको समझ में आया? यानी कि when I said ना, the above methods cannot be used for the preparation of haloarenes from phenol, that means we cannot go from here to here,
but we can go from here to here because we are going from alcohol to haloalkane, right? Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. Chaliye. Right, the major products for following. Write a question. ये क्या है बताइए फातिमा? दिस B1 यहाँ पे जो हमने लिखा है, हैलोअरीन है या हैलोअल्केन है? फातिमा टेल मी, हैलोअल्कीन और हैलोअरीन? बाकी लोग चैट में बताइए, हैलोअल्कीन और हैलोअरीन। Haloarene. अरे बेंजीन रिंग में रिंग होता है भाई, हैलोअरीन के पीछे ही पड़ गई हैं आप फातिमा। रिंग है यहाँ पे फातिमा। नहीं, आपको मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा था क्या? आप एक बात बताइए, नहीं पढ़ा था तो फिर हम आपको अलग से संडे के दिन बुला के पढ़ाएंगे। 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा ऊपर से गया था क्या? कुछ नहीं याद? yes, sir. अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमको ये लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है, एक बार पढ़ा लेंगे आपको फिर, ठीक है। संडे आपका स्कूल होता है कि नहीं होता है? ये संडे स्कूल है, हाँ। ये संडे स्कूल है, किस संडे नहीं होता है फिर? नहीं, हर संडे स्कूल है, सैटरडे हर के दिन। संडे? सैटरडे के दिन आप फ्री? सैटरडे मेरा फ्री नहीं रहता है। संडे के दिन कितने बजे आते हैं आप स्कूल से? यहाँ के 2 बजे। यहाँ के 2 बजे आते, फिर 4 बजे से आपकी क्लासेस है? कितने बजे है आपकी क्लास संडे के दिन? 5 बजे। 5 बजे से आपकी क्लासेस है संडे के दिन। संडे के दिन हम 4 बजे से तो नहीं दे सकते। हम एक काम करते हैं, पहले आपको ना 11th क्लास के लेक्चर्स हम भेज देते हैं, उसमें से आप स्टार्ट कीजिए देखना, ठीक है। ठीक है, Yes, उसके sir. बाद सैटरडे को, क्योंकि देखिए सैटरडे को आई कैन नॉट कमिट बिकॉज आई हैव ऑलवेज लाइक आपका जो किंगडम है ना, किंगडम केसेस है 4 to 8, आई ऑलवेज हैव माई क्लासेस, ठीक है। एंड बिफोर दैट आई हैव टू बी लाइक रिसर्च वर्क चल रहा है और उसमें भी थोड़ा काम ज्यादा है, इस वजह से सुबह मेरे पास जनरली टाइम नहीं रहता है आजकल। एंड सैटरडे इज ऑल्सो वर्किंग इन माई इंस्टीट्यूट हियर, सो सैटरडे दैट इज वाई कैन नॉट हैपन। हम आपको लेक्चर्स दे देंगे रिकॉर्डिंग, उसको आप पहले कीजिए, उसके बाद वी विल सी। Your focus on it should be always on where your focus should be always on the carbon atom that is having hydroxy group, okay। बाकी आप बाकी चीजों को आप मत देखिए, कार्बन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में उसको देखिए, अगर वो बेंजीन में है, अगर वो बेंजीन का कार्बन है तब उसमें आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगा नहीं होगा, otherwise you just need to replace that with the halogen atom that is very much visible here। write all of these products and send me in WhatsApp।
Sarah, one of the reaction will not happen ना, हमने तो वो point लिखाया था ना. Can you identify what I am saying, Sarah? Yes, sir. Wafia, Yes. look, have we done any reaction with SOCl2? पीछे देखिए. We have done some, right? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. What is that reaction? Can you tell me? We have ROH, right? Yes, sir. And it is reacting with SOCl2, and what it is giving? Tell me. RCl plus SO2 plus HCl. Very good. ठीक है. Now you tell me what is the R here? ये तो OH हो गया आपका. This part is the R, ना? No. Yes. ठीक है. So now what will be the product? Tell me. OH को हटाइए. वो जो can you see what is the R group? What I mean by R group, Wafia? Wafia, can you understand what I mean by R group here? Yes, sir. Do you see that you want to change the product that you have made? Yes. Okay, try now. बस OH को हटाना है. Whatever R group is there, okay? R group means alkyl group आपका. I think I have to go more basic here.
Sarah, you must have changed one of the answers now. Please send it to me. Waiting. Fatima, can you send me whatever you have done till now? Fatima and Razan, please send me whatever you have done. देखिए हम पहले का बना रहे हैं, आप लोग प्लीज उसके हिसाब से बनाइए. ओके. So from here everything is there. You will just remove this OH and this bond with carbon atom will be with chlorine. ठीक है. This is your R part, the alkyl group, and then we have the Cl. Please send me your answers now. Fatima and Razan, please send me your answers, whatever you have done till now. Oh, you don't have the phone now. कॉल आया तो अब मैं स्टॉक ऑन चला गया. फोन. अच्छा. ठीक है. आपका आंसर ये आया था फातिमा. टेल मी फॉर द फर्स्ट वन. फातिमा. For the first one, I don't know what is the bond line part, but then after that, I wrote Cl plus SO2 HCl plus HCl. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहे. बॉन्ड लाइन आपको नहीं आता है फातिमा? आपको बॉन्ड लाइन बॉन्ड लाइन में ये वाला क्या है? वो हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे. आपने ये ड्रॉ किया कि नहीं ड्रॉ किया? ऐसे ड्रॉ किया आपने? नहीं ड्रॉ किया? हाँ या ना बताइए. नहीं. नहीं ड्रॉ किया. ठीक है. सेकेंड वन में आप यानी कि आपने ऐसे लिखा Cl plus SO2. Yes, plus HCl, yeah. ठीक है. तो ये HCl और SO2 तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग हैलोअल्केन. ठीक है. अब आपको हमने जब ये ऐसे लिख के दिखाया तो आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है? नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया. नहीं sir. नहीं समझ में आया. ठीक है. ये अल्कोहल है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. ठीक है. जब एसोसिएट के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल तो क्या बनाता है? हमने लिखाया है? नहीं लिखाया है. Cl plus SO2 plus HCl. Cl बनाता है. आपने Cl लिखा है. Yes. अरे तो आप सही लिखिए ना, फिर हम क्या बताएं आपको? आप गलत जब लिखिएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ से आपने RCl की जगह सिर्फ Cl लिखा है. No, I wrote RCl. तो फिर जब हम आपसे पूछ रहे हैं आपने सिर्फ Cl लिखा था, फिर आप हाँ क्यों बोल रही हैं? आपने क्या लिखा है बताइए? RCl. R क्या होता है? व्हाट इज R? देखिए 3 आंसर है. R ये होता है या फिर ये आंसर है. सर नहीं पता क्या होता है, बताइए R क्या होता है? नहीं पता.
नहीं पता आपको, ठीक है। देखिए कार्बन में ना क्या होता है, सी देखिए ये सारे रिएक्शंस जो है ना, इन सब रिएक्शन में क्या हो रहा है, आप ऐसे देख लीजिए, जब हमारे पास CH3OH रहेगा और उसके साथ हम SOCl2 को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl। सारा बाय द वे यू कैन लीव, ओके, सिंस यू आर डन। रजान लास्ट वाला रिएक्शन नहीं होगा, आई होप यू नो व्हाई इट विल नॉट हैपन, बिकॉज़ हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था कि फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, एंड दिस इज अ फिनॉल, राइट रजान, कैन यू सी दैट? ठीक है, ओके। चलिए देखिए फातिमा, सी ये बनेगा CH3Cl, ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब उसी तरह अगर 2 कार्बन होंगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए वी हैव 1 कार्बन 2 कार्बन एंड देन SOCl2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 2 कार्बन तो ऐसे ही कैसे रहेंगे और OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, सही है? यस और नो, टेल मी। Cl का ठीक है, फिर से देखते हैं, ये R ग्रुप जो है ना, R को क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, एनी ऑफ द अल्काइल, ओके। अब यहाँ पे आपको ये बताइए, वी हैव CH3CH2OH, अल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो OH की जगह क्या लगता है, Cl। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब उसी तरह आपके पास मान लीजिए ये कुछ हो इस तरह से, ये बेंजीन रिंग है क्या, बताइए, इज दिस बेंजीन रिंग? नो। कितने कार्बन है इस वाले पूरे में, बताइए, हाउ मेनी कार्बन्स डू वी हैव? 6। ठीक है, SOCl2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही कैसे रहेगा, है ना, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए, Cl। Cl। अब आ रहा है समझ में आपको? यस सर। ठीक है, अब इन सब में क्या है, हमारे पास चेंज कहाँ पे हो रहा है, बस ये OH हट रहा है और क्या लग जा रहा है, Cl लग जा रहा है ना। सो व्हाट डू वी डू, वी रिप्रेजेंट इन जनरल, इन जनरल हम कैसे लिख देते हैं इसको, R ग्रुप, ऑल ऑफ दीज आर अल्काइल ग्रुप, देखिए क्या मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, so all of these are what, alkyl group, different types of alkyl groups, and that is why we write alkyl group, any alkyl group if it has OH and it reacts with SOCl2 then it is going to form RCl। ठीक है, तो ये R जब भी हम लिखे ना तो आप समझिए कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आ रही बात फातिमा, टेल मी? ठीक है, अब देखिए, अब आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा सबका, यस और नो, टेल मी? यस सर। ठीक है, तो देखिए आई एम जस्ट राइटिंग इट वंस अगेन, यहाँ पे ये हो जाएगा Cl, राइट, this alkyl group as it is, and here what we will put, tell me? Cl। Very good, now tell me, is this phenol or alcohol, बताइए? अल्कोहल। अल्कोहल है, वेरी गुड, अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ तो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH की जगह, Br। वेरी गुड, एंड हियर आल्सो दिस इज आल्सो एन अल्कोहल, राइट। अब इन सब से हमको लेना देना नहीं है, I just want to see that where we have carbon atom and here we have carbon atom, so this OH will be replaced by, इससे रिप्लेस हो जाएगा I, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये phenol है, right? So phenol will have the partial double bond due to resonance, and that is why this bond will not break, and that is why no reaction. Okay? यस सर। ठीक है, अब हम आप लोगों को प्लेलिस्ट भेज दे रहे हैं, प्लीज वो 11th क्लास का आप लोग देखिए। रजान, you don't need it ना, रजान and Sara? Do you need it? Yes or no? Tell me. No, no. No, sir. हाँ ठीक है, okay. So I will send this to Fatima and who else? Wafia also, I think. अहमद को भेज देना होगा, मरियम तो आती ही नहीं है क्लास, आज उसने टेस्ट भी दिया, वाफिया आज इससे हम पूछेंगे क्या हुआ मरियम।